Dear students, class 9, our today's lesson is our last chapter because we've done poem Abu bin Adam. Our last chapter is Unit 14, Biodiversity in Pakistan. Let's start reading and understanding it so that it becomes easy for you, and then I'll start giving you all the question answers, the comprehension of the lessons that I have not given as yet. And then further we will do all past papers inshallah, and I'll teach you how to attempt a good paper and how to answer properly. Let's start Unit 14, Biodiversity in Pakistan. पाकिस्तान में हयातियाती तनों, डिफरेंस, डाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्स वर्ड आपको समझाता है कि डिफरेंसेस. बायोडाइवर्सिटी प्लांटेशन में डिफरेंस, उसमें आपके प्लांट्स भी आ सकते हैं, मतलब जूलॉजिकल एंड botanical difference comes under one name, that is biodiversity in Pakistan. Let's start with the meaning of the word biodiversity. Biodiversity is the variety of plants and animal life in the world or in a particular habitat. एक तरह के जो environment है, जो मौसम है, उसके हिसाब से जैसे plants वहाँ grow करते हैं और जैसे जानवर वहाँ रहते हैं, इस सारी explanation को biologically biodiversity कहते हैं. Biology has a lot of branches, but basically it has two branches. Biology has two branches, that are zoology and botany. So further division is elaboration in your other subject. Now, right now in this lesson, we can only explain to you what the writer or the selector of this lesson is trying to explain. It can be referred to all the variety of life that can be found on earth. Everything. Okay? Every living thing. Biodiversity generally refers to diversity or variability of living organisms present on this planet, earth, and other species which have driven extinction, which are either alive or have become extinct millions of years ago. I'll start with page 135. Pakistan is blessed with several natural beauties, including indigenous wildlife, beautiful mountains of Himalayas, deserts of Cholistan and Thar, man-made forests like Changa Manga forest, as well as several natural resources from the Balochistan trails. It also holds second tallest mountain, K2, which is a really challenging tourist attraction in terms of mountain climbing. Four seasons bloom each year to their fullest, and average rainfall of 12 to 14 inches per year leads to make Pakistan a very fertile agricultural land. But despite its enormous beauty, a number of animal and plant species are threatened or endangered due to over exploitation and loss of natural habitat. Rapid human population growth is increasing pressure on the country's natural resources. Increased poverty has forced rural people to exploit biodiversity or unsustainable rates. Unsustainable, the things that we cannot withstand. फैक्टर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काट देना, ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा इलाके में जानवर छोड़ देना और फिर उनकी वजह से वहाँ पर ग्रोथ नहीं होती. सॉयल इरोजन, ये सॉयल इरोजन इसलिए होती है बिकॉज व्हेन फॉरेस्ट आर कट, सॉयल में होल्ड करने के लिए ट्रीज नहीं होते और फिर सॉयल इरोजन मूवमेंट स्टार्ट होती है. सेलिनिटी, नमकियात, एंड वाटर लॉगिंग, पानी का खड़ा होना, आर पोजिंग मेजर थ्रेट्स टू द रिमेनिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री. The continuing loss of forest habitat with its associated flora and fauna will have serious implications for the nation's other natural and agricultural ecosystems. Perhaps the best known of Pakistan's endangered mammals is the snow leopard, which makes its home in the mid-level elevations of the Himalayas. Threatened by which makes its home threatened by poaching and loss of habitat. Poaching is उसकी skin उतार देते हैं, and loss of habitat. The snow leopard is iconic among endangered species in the Himalayan range. In the lower subtropical regions of Pakistan, small populations of tigers still exist. Other endangered land mammals in Pakistan include the Asian elephant, hog deer, Asiatic wild ass, woolly flying squirrel, Kashmir musk deer, and the fishing cat. Marhor, the national animal, is on the brink of extinction too. This wild goat is classified as near threatened
by the International Union for the Conservation of Nature. The bird most at risk of extinction in Pakistan is the red-headed vulture. Another vulture species found in the region, the Egyptian vulture, is also globally endangered. Another, the white-headed duck, maintains a population stronghold in Pakistan as it declines in other countries. Similarly, the Indus River dolphin is a freshwater dwelling cetacean species found in the Indus River. There is serious threat to this species because of the water regulatory barrages constructed on the Indus River. Shortage of water and water diversion to meet agricultural needs of the country resulted in extirpation of Indus River dolphin. Accidental mortality of Indus River dolphin is attributed to entanglements in fishing nets as bycatch of fish, unsustainable fishing practices, and entrapment in irrigation canals. Contamination of river water due to agrochemicals and industrial waste significantly contribute to the deterioration of Indus River dolphins' core and potential habitats. Likewise, Balochistan's forests are one of the most extensive and oldest juniper ecosystems of the world. These provide habitats to many unique birds, mammals, and species of plants that have a very restricted range of distribution. This extensive open woodland is spread between 2100 to 3000 meters. Juniper is an extremely slow growing species and attains only 1-inch diameter growth and 1 cubic feet in 50 years. At higher elevations, the trees have become stunted and dwarfed and form large prostrate patches on rocks, especially on wind exposed slopes in the Ziyarat, Zargun, and Harboi ranges. Juniper forests include some of the oldest trees of the country. Unfortunately, this national heritage is facing threat from a parasitic disease caused by a small plant, the dwarf mistletoe. This parasite is expanding in the Ziyarat juniper tract and it needs immediate attention to protect the ecosystem, which is providing habitat to several endemic species of shrubs and herbs in the forest undergrowth. In this backdrop, the government of Pakistan has shortlisted 6 parks for protection of biodiversity. These include Lal Sohandra National Park, Bhavalpur, Punjab, Kirthar National Park, Sindh, Khunjrab National Park, Northern areas, Chiltan, Hazarganj, Ganji National Park, Balochistan, Margala Hills National Park, Islamabad, and Chitral Gol National Park, Khyber Pakhtunkhwa. Further, Pakistan has 14 national parks, 99 wildlife sanctuaries, and 96 game reserves with the aim of preserving and conserving the biodiversity. Kirthar National Park has the distinction of being the first park on the UN list of protected areas. There are certain challenges which Pakistan is facing. These are political instability, lack of technical and institutional capacity, lack of financial resource, lack of awareness, insufficient access to local knowledge, legal impediments, limited public and stakeholder participation, lack of mainstreaming of biodiversity with other sectors, lack of transfer of technology and expertise, inadequate engagement of scientific community, poverty, increasing population, climate change, and natural disasters. It is high time that we act now, otherwise, the biodiversity will vanish and the next generation would see only pictures, movies, and stuffed toys of biodiversity. Now, let's start reading the meanings. Inadequate, not right, ghair munasib, not enough, not good enough. Engagement and arrangement to do something at a particular time, especially something official or something connected with your job. कोई भी आपका मामला कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट मामला जिसमें आप मसरूफ़ हैं. मेन स्ट्रीमिंग, to make a particular idea or opinion accepted by most people. Preserving, to keep a particular quality,
feature, etc. to make sure that something is kept endemic, regularly found in a particular place or among a particular group of people and difficult to get rid of. Woodland, an area of land that is covered with trees, potential that can develop into something or be developed in the future. Diversion, the act of changing the direction that somebody or something is following or that something is used for. Cetacean, a marine mammal of the order of Cetacea, that is a whale, a dolphin, etc. Extirpation, to remove or destroy totally. Now I've read the meanings. Let's start doing the translation. Pakistan में हयातियाती तनाव. We'll start with the first paragraph from page 135. हयातियाती तनाव क्या है? माहौलियाती निज़ाम क्या है? खतरे से दो चार अनवा से क्या मुराद है? What is biodiversity? What is ecosystem? What do you mean by endangered species? पाकिस्तान को कुदरती हिस्सों से अल्लाह ताला ने नवाजा गया है, जिनमें मकामी जंगली हयात, हिमालय के खूबसूरत पहाड़, चोलिस्तान और थर के सहरा, चांगा मांगा की तरह मसनूई जंगलात और इसी तरह इसके साथ साथ बलूचिस्तान के सिलसिलों में कुदरती वसाइल शामिल हैं। इसमें दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 भी है, जो हकीकतन कोह पहमाई के मैदान में सयाहों के लिए एक मुश्किल मुकाम है। साल में 4 मौसम अपने पूरे जोबन पर होते हैं और औसतन 12 से 14 इंच सालाना बारिश पाकिस्तान को एक ज़रख़ेज़ ज़रई मुल्क बनाती है। लेकिन इसकी बेइंतहा खूबसूरती के बावजूद बहुत से जानवरों और पौधों के बेजा इस्तेमाल और कुदरती मस्कनों को ख़त्म होने की वजह से ख़तरे में पड़ गए हैं। आबादी में तेज़ रफ्तारी मुल्क की कुदरती वसाइल पर दबाव बढ़ा रहा है। बढ़ते हुई गुर्बत और देहाती लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त हद तक हयातियाती तनाव के इस्तेसाल पर मजबूर कर दिया गया है। अनासिर मसलन जंगलात की कटाई, हद से ज़्यादा गलेबानी, ज़मीन का कटाव, खारापन और सेमोथोर मुल्क की बकिया हयातियाती तनाव को बुरे ख़तरे से दो चार करती है। जंगली मस्कनों की तबाही और साथ साथ नबातात और जानवरों की तबाही भी कौम को दूसरे कुदरती और ज़रई माहौलियाती निज़ाम को ख़राब करने पर उसके बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। बर्फ़ का चीता पाकिस्तान के ख़तरे से दो चार ममालिया जानवरों में से सबसे जाना पहचाना है, जो सिलसिला कोहे हिमालय के दरमियानी बुलंदियों पर अपना ठिकाना बनाए हुए है। मस्कन ज़ाया होने और गैर कानूनी शिकार से दो चार बर्फ़ानी चीते हिमालय के इलाके में ख़तरे से दो चार अनवा में एक मूर्ति की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान के नशेबी इलाके में भी चीते की मामूली सी आबादी मौजूद है। पाकिस्तान में मौजूद ख़तरे से दो चार खुश्की में ममालिया जानवरों में एशियन हाथी, सूर, जंगली गधे, उड़ने वाली गुलहरियाँ, कश्मीरी मशकनाफा हिरन, एक ख़ास किस्म का हिरन और ख़ास किस्म की बिल्लियाँ शामिल हैं। मारखोर, जो कि कौमी जानवर है, नापैद होने के करीब है। कुदरत के तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल अक़वामी यूनियन की इस जंगली बकरी को ख़तरे से दो चार जानवरों के ज़मरे में शुमार कर दिया गया है। पाकिस्तान में जो परिंदे नापैद होने के ख़तरे में सबसे ज़्यादा दो चार हैं, वो सुर्ख सर वाला गिद्ध है। इस खत्ते में मौजूद गिद्ध के दूसरी अक़साम में से मिस्री गिद्ध भी आलमी तौर पर ख़तरे में है। एक दूसरा नौ अनवा यकीनी सफ़ेद सर वाली बत्तख ने पाकिस्तान को अपना मजबूत गढ़ बना लिया है, क्योंकि दूसरे ममालिक में इसकी आबादी कम हो रही है। इसी तरह दरियाए सिंध की डॉल्फिन दरियाए सिंध में रहने वाले ताज़ा पानी की ममालिया की नौ है। इस नौ को दरियाए सिंध पर तामीर होने वाले वाटर रेगुलेटरी बैराज की वजह से सख्त ख़तरा लाहक है। पानी की किल्लत और मुल्क की ज़रूरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पानी के रुख मोड़ने के लिए दरियाए सिंध के डॉल्फिन को मुकम्मल तौर पर नापैद कर दिया। मछलियों के शिकार के दौरान जाल में फंस जाना, मछलियों की गैर कानूनी शिकार और आपाशी की नहरों में फंसना इंडस डॉल्फिन की हादसाती अमवात के ज़िम्मेदार हैं। ज़राअत में इस्तेमाल होने वाले कीमियाई मादे और सनती फजले की वजह से पानी की आलूदगी ने इंडस की डॉल्फिन के मौजूदा और आइंदा मस्कनों की तबाही में एक अहम किरदार अदा किया है। इसी तरह बलूचिस्तान के जंगलात दुनिया की माहौलियाती निज़ामों में सबसे ज़्यादा वसी और कदीम तरीन सनोबर के जंगलात हैं। ये जंगलात बहुत से अनोखे किस्म के परिंदे और ममालिया जानवरों और पौधों की अनवा का मस्कन फराहम करते हैं और बहुत महदूद पैमाने पर पाए जाते हैं। ये वसी और खुला जंगल 2100 से 3000 मीटर के रकबे पर फैला हुआ है। सनोबर के बहुत आहिस्ता नशोनुमा पाता है। उसके 50 साल में सिर्फ 1 इंच
قطر اور کیوبک فٹ نشو نما حاصل کرتا ہے۔ زیادہ بلند مقامات پر درخت نشو نما نہ پانے کی وجہ سے چھوٹے رہ گئے ہیں اور انہوں نے زیارت اور زرغون کی اور ہربوئی کے سلسلوں کے ڈھلوانوں میں زمین پر جھکے ہوئے بڑے پیوند بنا رکھے ہیں۔ صنوبر کی جنگلات میں ملک کے کچھ قدیم ترین درخت پائے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ قومی ورثہ ایک چھوٹے اکاسپل بیل پودے کے ذریعے میں پھیلنے والا ایک طفیلی بیماری کے خطرے میں دوچار ہے۔ یہ پیراسائٹ ایک جراثیم زیارت کے صنوبر کی جنگلات میں پھیل رہا ہے اور اس ماحولیاتی نظام کو بچانے کے لیے فوری توجہ کی ضرورت ہے، جو اس جنگل میں اگنے والے چھوٹی جھاڑیوں کو مستقل پاجانے کھا رہا ہے، ان کو ختم کر رہا ہے، فراہم کرتا ہے۔ اس صورتحال کے تناظر میں حکومت پاکستان نے حیاتیاتی تنوع کی حفاظت پر 6 پارک مخصوص کر دیے ہیں۔ ان میں لال سہانس نیشنل پارک بھاولپور پنجاب، کیرتھر نیشنل پارک سندھ، خنجراب نیشنل پارک شمالی علاقہ جات، چلتن ہزار گنجی نیشنل پارک بلوچستان، مرگلا ہلز نیشنل پارک اسلام آباد اور چترال گولڈ نیشنل پارک خیبر پختونخوا شامل ہیں۔ علاوہ ازیں پاکستان میں 14 قومی پارک، 99 جنگلی حیات کے محفوظ مقامات اور 96 گیم ایریاز پائے جاتے ہیں، جن کا مقصد حیاتیاتی تنوع اور ان کی حفاظت کرنا ہے۔ کیرتھر نیشنل پارک کو اقوام متحدہ کے محفوظ مقامات کی فہرست میں پہلا مقام حاصل ہے۔ پاکستان کو بعض چیلنجوں کا سامنا ہے اور وہ یہ ہیں: سیاسی عدم استحکام، تکنیکی اور ادارہ جاتی صلاحیت کا فقدان، معاشی ذرائع کی قلت، آگاہی میں کمی، مقامات علم تک ناکافی رسائی، قانونی رکاوٹیں، عوامی اور بڑے عہدیداروں کی محدود شمولیت اور دوسرے شعبوں کے ساتھ حیاتیاتی تنوع مربوط کرنے کی کمی، ٹیکنالوجی اور مہارت منتقل کرنے کی کمی، سائنسی کمیونٹی کا ناکافی تعلق، غربت، بڑھتی ہوئی آبادی، موسمیاتی تبدیلیاں اور قدرتی آفات۔ اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ بصورت دیگر حیاتیاتی تنوع ختم ہو جائے گا اور اگلی نسل حیاتیاتی تنوع کی صرف اور صرف تصاویر اور فلموں میں ہی دیکھ پائیں گے۔ اب ہمیں سمجھایا گیا in this lesson that Pakistan is blessed with natural beauties like indigenous wildlife, high and snow-capped mountains, deserts, forests and 4 seasons. Pakistan's fauna and flora can be prescribed by taking some serious and practical steps. Both public and government should play their part. Wildlife Department has done a lot to protect diversity. Government should stop deforestation, overgrazing and soil erosion, which are the main reasons of threats to flora and fauna of the country. There are many endangered species. The writer has mentioned all of them. These are snow leopards, tigers, Asian elephants, hog deer, Asiatic wild ass, squirrels, musk deer, fishing cat, markhor, red-headed vulture, river Indus dolphin, junipers, etc. The 3 species of peacocks, green peafowl, Indian peafowl and Congo peafowl, these are most endangered species. It is less than the others. Its population is fastly decreasing. These peacocks are also decreasing. They are endangered. As individuals, we should plant more and more trees and avoid ruthless cutting of forests. We should avoid poaching and unsustainable fishing practices. We should keep our land and waters clean, which will save many species of animals and plants. Pakistan faces the challenges of political instability, financial resources, lack of awareness, lack of expertise, poverty and increasing population, inadequate engagement of scientific community and natural disasters. We have to curb these problems. We have to stop these problems. Otherwise, all these beautiful species will finish and there will be nothing left for our coming generations. All they will be able to do is just watch all of them in movies or in photographs. Nothing will be left. I hope you understood the lesson well. I hope I explained it to you in Urdu also, the hard words and everything. I read it to you and I then read the Urdu translation, then explained the summary to you. Hopefully you must have understood it. Please like and subscribe our channel and do encourage us. Thank you so much for your precious time.